Hello guys, this is Sukhuda Kotak this side from the Educare. Welcome back to our channel for daily current affair videos. आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 16th October 2022. Before starting with the current affairs for the day, don't forget to follow our Instagram channel Be Educare Official where regular quiz and exam updates are given. Starting with the current affairs, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्राइट ट्रेक भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में उड़ीसा में 16 अक्टूबर 2022 को। द रेक्स डेस्टिनेशन बिलासपुर होगा एंड ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एल्यूमिनियम रेक मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिया में एंड जो प्रॉपर्टी है वो फुल्ली लॉक वॉल्टेड कंस्ट्रक्शन के साथ करी गई है एंड किसी भी तरीके का वेल्डिंग नहीं किया गया है इस सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर। आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने बहुत कुछ इंपोर्ट किया था निकल और कैडमियम इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। The proliferation of the aluminium wagons will gradually result in the less import. At the same time, it also will be good for the domestic aluminium industry. हैदराबाद ने जीत लिया है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। ये अवार्ड उनको दिया गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 के द्वारा, जो ऑर्गेनाइज किया गया था जेजू साउथ कोरिया में 14 अक्टूबर को। सिटी ने एक और अवार्ड भी जीता है दूसरी कैटेगरी में, दैट इज द लिविंग ग्रीन फॉर द इकोनॉमिक रिकवरी एंड द इंक्लूसिव ग्रोथ। हैदराबाद ने ना केवल कैटेगरी अवार्ड्स जीता है बट ओवरऑल वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का अवार्ड जीता है। ये बेस्ट है बाकी के 6 कैटेगरीज में से। हैदराबाद ने बीट किया है कुछ बड़ी बड़ी सिटीज को जैसे कि पेरिस, मॉन्ट्रियल, मैक्सिको सिटी एटसेट्रा। India has been ranked 107 out of 121 countries in the Global Hunger Index 2022. कंट्री का ओवरऑल स्कोर जो है वो आया है 29.1 एंड वो लेबल किया गया है एज वेरी सीरियस एट द हंगर लेवल। 2021 में इंडिया की पोजीशन 101 थी आउट ऑफ 116 कंट्रीज, जबकि 2020 में इसकी पोजीशन थी 94th एंड 2021 की रैंकिंग में उसको स्कोर मिला था 28.2 अमंग 116 कंट्रीज और इंडिया फिलहाल जो है 6 प्लेसेस गिर गई है रैंक में। अफगानिस्तान इज द ओनली कंट्री विच इज बिहाइंड इंडिया इन एशिया विद a rank of 109. Pakistan has a rank of 99, Nepal has a rank of 81, Bangladesh has a rank of 84, while Sri Lanka has a rank of 64, which is far much more better than compared to India. According to the national release of the India Global Hunger Report 2022, जो रिलीज करी गई थी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा, इंडिया की पोजीशन जो है 107 आई है अमंग द 121 कंट्रीज। ये इंडेक्स जो है एक इनएक्यूरेट मेजर है हंगर का जो सफर करते हैं लोग इंडिया के पॉपुलेशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 इंडिकेटर्स जो 4 इंडिकेटर्स यूज करे गए थे वो कैलकुलेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। Aadhaar enrollment for the newborns along with the birth certificate is expected to be available in the all states in the coming next few months, which has already expanded beyond 16 months currently, जहां पे आधार फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही है न्यू बॉर्न लोगों को। गवर्नमेंट के सोर्सेस ने ये भी बताया है कि 16 स्टेट्स ने ऑलरेडी आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू भी कर दिया है। Starting with the current affair quiz for the day. The first question is, what does AND stand for in the proposed NGLV launch vehicle system of ISRO, which may replace the present operational launch system of PSLV? The next question is, under the Bharat Krishi satellite program, a minimum of how many satellites will be required to cover the entire agricultural area of India? The next question is, which city is going to host the General Assembly of the International Criminal Police Organization, that is Interpol?
Please mention your answers in the comment box below. The person who is giving a correct answer will be given a shout out in the next upcoming video. Coming to the answers of the questions asked in the previous video, President Draupadi Murmu has launched Param Kamrupa supercomputer facility in which IIT? The correct answer is IIT Guwahati. The next question is, who has been elected as the new president of ILA? The correct answer is Abdul Latif Rashid. The last question was, Prime Minister Narendra Modi laid down the foundation stone of bulk drug park in which of the following states? The correct answer is Himachal Pradesh. Shout out to Neha, Hita Chabia, Tanvi Nayak for giving the correct answers in the previous video. That's it, guys. Like this video and subscribe to our channel for daily current affair videos if you haven't subscribed yet. Also for classroom live class, recorded lecture, books, ebooks, and test facilities, you can contact on the number which you can see on your screens. For more such MCQs, you can download the app from the link which is given in the description box below.